جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Jazakallah. So I request everyone to stand for the national anthem as we pay tribute to our national country, right? Thank you so much, everyone. Now, before we dive into the main program, I want to extend a heartfelt thank you to the Microsoft Learn and MCT community Pakistan and our organizer for MCT Karachi, Hafiz Muhammad Ataullah, for making this event possible. Thank you, Hafiz Muhammad Ataullah. Now, special thanks go to our venue partner, this Newport Institute of Economics and Communication, and a special thanks to goes to Ms. Hima Bukhari and Newport's management for this for their generous support. So I would like all of you to thanks to them. Afterwards, we need to move towards our first speaker. I really need to appreciate the incredible mind, special thanks to Ms. Gulnaz Mushtaq, who is joining us all the way from Islamabad. I really need to introduce her to all of you. She worked with both the public and private sectors, including the Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, Islamabad. Pacific Business Solution, with London, USAID, Guardian University, Islamabad. Moreover, Ministry of Finance, Pakistan, and she worked for the Asian Development Bank Corporate Systems, again from Islamabad. And moreover, she is a Microsoft certified trainer and MCT regional lead for Pakistan
And so I would like to welcome her, so for her big, have a big round of applause. Thank you very much. Guys, should I start? Yes, ma'am. Thank you very much. So today we are in Microsoft Build Afterparty MCT Community Pakistan, and I very warm welcome everyone who is here to join this session. So today's agenda is that we are going to talk about what is Microsoft Learn, getting started with Microsoft Learn, registration process, how we can link our Microsoft certification profile with the Microsoft Learn account, what would be our achievements, and what we can learn, and what would be the collections and things like that. So there are a lot of things to discuss about. So this is my short introduction. My name is Gulnaz Mushtaq, as you can see on the screen. So I am a Microsoft certified trainer since 2018, and I train hundreds of students all over the world. And now I am serving the MCT community Pakistan as regional lead. Also, Microsoft awarded me the Enrique Lima Award, which is like a seventh or eighth award. And the last year it went to the Pakistan, and that is really honor for us, honor for Pakistan. I have diversified experience in the field of information technology. I have worked with many organizations. I have worked with many public sector and private sector organizations. Also, I took part in uh, activating the free Power BI tool that is part of MCT program benefits and tools. So you can say that I am a community enthusiast, and that is very good. And I recommend everyone to my new generation, to my students and my community professionals and everyone who belong to the technology field, that you should participate in community work and community events, so that we can present a positive image across the world, the positive image of Pakistan across the world. We are working day and night in this regard, and I would expect the same passion from you guys as well. So basically, as far as I am diversified, I have diversified experience, but as far as the Microsoft is concerned, I have experience in Microsoft Azure Cloud, Azure Security Management, also in the Microsoft Server Administration, project management, and things like that. So as you can see, this is my Microsoft Certified Trainer badge. Also, I am having the MCT Regional Lead title as well, and Microsoft awarded me with the Enrique Lima Award. And if you guys want to join me on LinkedIn, this is my profile. It's very simple profile. You can search me on LinkedIn as Gulnaz Mushtaq. And in my background, you can see the MCT Community Pakistan Learning Room. And there is a short link over there. You can join the link, and everyone can be the part of that MCT Community Pakistan Learning Room, because how this learning room is helpful. This is for everyone, for every learner who is enthusiast about the Microsoft technologies. If you are a working professional, you're working somewhere, or if you are a student, or if you are having some technical issues, you want to ask something about the certification and things like that, you can come to our learning room and we will help you. So we are a kind of very successful community in Pakistan, and Microsoft is recognizing our efforts, our work, and everything. So I want everyone to be there to help your community, to help your people. So let's start about what is Microsoft Learn. So basically, Microsoft Learn is a all-in-one platform, and Microsoft Learn is a free learning platform that promotes technical learning and makes it accessible to everyone. So the Microsoft is the only, you can say, the organization who is providing so many learning resources free of cost. So this is only Microsoft who is doing. So Microsoft Learn is a great initiative by Microsoft. How would you benefit from the Microsoft Learn? Let's discuss about it.
So as you can see on the screen, this is a very simple link, which is learn.microsoft.com. So everyone can access this link, whether you are starting your career in Microsoft, whether somebody is working already in the industry who is expert and having many years of experience. Everyone can join this. This is a free platform. So I would recommend everyone who is today here in this session that you should join this link and create your profile on Microsoft Learn. So how will we create the profile on Microsoft Learn? So if you go to the link learn.microsoft.com, and there would be a sign-in link over there. So if you will click on the sign-in link, you should have some Outlook ID, Outlook or Hotmail ID, right? When you click on the sign-in, so it will ask you for any Outlook or Hotmail ID. And if you put that Outlook or Hotmail ID over there, so you will click on the next button, right? So right after clicking on the next button, it will ask you to what is your profile. So what is the profile? As this is just a demo profile, so that's why I have mentioned that MS Learn test something, right? So I would recommend you to display your full name. Like if you are having any of the names that would be displaying on your ID card or any of the government IDs, you can mention over there as well, right? So how would this Microsoft Learn profile will help you in the future? So this is a all-in-one profile that would be connected to your learning journey, that would be connected to the certification. If you are going for some future certifications about Microsoft, like you are going to uh, appear in the AZ900, AI900, AZ104, whatever the certifications. So the same profile will help you the achieving that certification. So that's why the information matters a lot. So I would recommend that whatever the information you are putting over there, that would be the real and genuine information, right? So once you will display the name, so right after clicking on the next button, it will ask you for mentioning your region. So this is very much important, that you should mention your original region. For example, if you are residing in the Pakistan, so you cannot mention as Canada or something, right? So you should mention the exact region wherever you are, because it will give you lots of benefits. So Microsoft have special discounts for Pakistan region. So very soon we are going to discuss about that. What are those benefits? What kind of benefits Microsoft gives you if you mention your exact region? Also, you can you will put your information, like you are going to create this account from one of your Outlook or Hotmail IDs. So you will mention that account over here and your country region, and click on this accept agreement button, and then save it. And here you go. It will give you the message that you are all set. Congratulations, you have successfully created your profile. So let me share another screen. I am stopping this screen and I am going to share another screen, because I am going to tell you about what Microsoft Learn looks like. Okay, fine. So once you created your account on Microsoft Learn, so you will go to the any of the browser like Chrome or Edge or whatever you have. So you will type on the search bar learn.microsoft.com, the same link we just have talked about. So learn.microsoft.com, and if you see over here, it's a sign in button, this one, right? So once you have created your profile, so you will sign in over here using the same credentials which helped you in creating your Learn profile. So now you will put your Learn profile ID and the password. Okay, so one thing is very much important, that from this using the same Outlook ID, you can work on Microsoft Learn profile and you can start your learning journey. Also, you will use in the future the same profile for the certifications, for exams as well.
So that's why the Microsoft Learn is all in one platform. Okay, so let me enter my password. Okay, fine. So as you can see over here, that it will give you a icon, right? So if you click on this icon, you can see your full name that you have mentioned during the creation of the account and your Outlook ID as well, right? So the profile is a huge thing. If I click on this profile option, the profile will give you everything about regarding your progress, whatever you have learned, whatever you are having in your account, your achievements, your training and everything, right? So right over here on the left side, as you can see, there are some achievements you have just gained and your certifications, your collections. So what are the certifications, achievements, and collection? Let's have a look. First of all, if I come over here, if I click this option, the achievements. So what is the achievement? That how many things you have learned, like modules and courses, etc. For example, you have achieved a badge, which is choose the right device for the right space with Microsoft Teams or optimize your, this is my learning, right? You can select as per your requirements, as per your job roles, things like that. We just gonna talk about that, right? So these are my, for example, these are my achievements. What are the collections? Collections are basically the series of learning you have just started, or maybe you are going to start in a few days, right? For example, on 12th of the July, I started learning the Azure architect thing. So this is the kind of collection for me in my account. So how will you start these things? For example, you have just logged in your learning profile and you can see over there in the top menu, there are a lot of things. The first and most important thing is the training session. Like the training section is the most important thing. Once you wanted to start your learning journey, if you are a student, or maybe you are a professional, maybe you are anyone of the IT field. So if I click on the training option, so it will say welcome back MS Learn account, and here are a few collection that system is going to give you a recommendation, right? Also, there are so many things, right? For example, you are confused that from where you want to start, where you should start. So you can go on the option browse learning paths. So here you can see there are so many paths based on your interest. For example, if you are working on .NET programming, so there are so many, a lot more options to start your journey on .NET learning, right? So if you want to study about the Azure, so there are so many things that you can learn about the Azure cloud platform. The Azure is the Microsoft cloud platform, and it is a fastest growing cloud platform. Also, if you want to work on the Dynamics 365, which is an ERP module by Microsoft, and industry all over the world, the industries are adopting this Microsoft Dynamics 365 for enterprise resource management, right? So there are so many options. Like you want to learn about the Microsoft 365, its previous name was Office 365, and so many other things. For example, your target is Azure. You want to learn about the Azure. For example, I select the option Azure as a whole. So system will give you so many options. For example, you want to get start with AI on Azure, you want to describe cloud services types, or you want to describe the benefits of using cloud service or something else, Microsoft Azure fundamentals, things like that.
For example, you want to start from the cloud services types, or you want to start with AI on Azure. This is just an example. You can refine your search accordingly. Whatever you want to learn, you should go for that, right? So this is just a demonstration. For example, you want to learn about the AI on Azure, Azure Cloud. So if you will click this thing, but make sure that you already signed in through your own profile, because it will give you so many experience points. These are experience points, right? And it will increase your level of learning as well. For example, you want to start from AI on Azure. If I click on this option, so here you go. This is your first learning course free of cost on Microsoft Learn platform, right? So it says that it would take 34 minutes, and it is having 10 units, etc. And these are the ratings that people have rated this course, this free course, right? Okay, so how would you start? For example, you start this learning module or collection. First of all, it will introduce you about the AI thing. You can have sometimes you will having some videos also. Sometimes it will give you some platform to code over there. Those will be free of cost. It will not charge anything from you. They will give you like for 3 or 4 hours a platform, so that you can code something, you can learn something, right? Okay, so continue this one. And for example, you started continuing your learning, and at the time of at some certain time, you have to go something to do, some important work comes, and you have to go for a short lunch break or something like that, right? So you will not close or sign out your account, but if you can see at the top of the screen on each page, this is unit 2 of 10. So for example, at the unit 2, you want to have some break, or you just want to quit for the time, and don't quit like sign out this thing or close your browser, but you can save your progress till this time, right? If I click on this plus button over here, so how will this plus button will accommodate you, that it will ask you whether you want to add this thing in your favorites, or is there some other collection to save? You can give it a name by your own. For example, you click on the new collection thing, and you want to give it a name like AI on Azure, and submit your progress. Fine. So now it saves the AI on Azure, sorry for the spelling mistakes, the AI on Azure in your current account. Okay, fine. I have saved the collection, right? For example, you go for some important task, and you went some for some work, some lunch break or something like that, and you come back, and how will you start? For example, you open up your learn profile again, and here on this icon, if you go to the profile section, and here you can see the collection thing, this one, collections, right? So if I click on the collections, so this was your collection. You want to start from the resume from this step. If I click on this AI on Azure, it will let you know that you left from this section, right? So if I click on this link, it will start from the same point where you left, right? So that's not a big deal. Why? Because it will save your time, right? Okay, so what are the achievements? What are the achievements? Let's have a look. If I go to the profile section, and here you can see these are your achievements. For example, if I complete this whole module, and
I will having some module or courses which I just have completed. So how will it benefit you? For example, you don't have any Microsoft certification, but you want to show someone that you gained these skills. You want to apply for some jobs or something, but you want to show someone that you have gained these skills. So don't worry about that, because you can print this thing. For example, if I click on this option, the print option, so it will open up another screen and you can see this certificate by the sign of Microsoft CEO. And if I click on the option print over here, so it will ask you if you are having some printer installed, that's fine. And if you don't have any printer, don't worry about that. You can print it to as a PDF format and you can send someone this as your learning certificate, something like that, right? So there are so many other options just like that. Also, sometimes there are some challenges you have to complete. Let's talk about some challenges as well. What are the challenges? For example, if I go over here on the training main option, so this is the training main screen. And if you scroll down a little bit, you will see there is a something that is called student resources. So this is a very much beneficial option for the students who are about to start their career path and they want to start their career journey, right? So if I click on this explore student hub option, you can see these are specifically made for the students. So currently, what are the challenges I talk about? The most recent challenge announced by the Microsoft is join the Microsoft Learn AI Skill Challenge, right? So challenge is about having some time period to complete, for example, like 30 days or maybe just like that. It's a short time period challenge and you have to complete the challenge. It is same kind of thing as we discussed. It is like a collection of collections. There are so many modules to complete and you have to complete it in some specific time period. And in certain cases, Microsoft will give you free vouchers as well. And in certain cases, Microsoft will give you the certificate as well, right? So you have to complete the challenge in the given time period, right? Okay, so if I click on this thing, so it will directly get me to the challenge page. Just like that, you can save the challenge. For example, you have started this challenge. These are the terms and conditions. First of all, read out the terms and conditions. And here you can see that Microsoft will give you some trophies uh, after completing these specific challenges, right? For example, the machine learning, if I go to the challenge of machine learning and I started the challenge, from today. It says that it will be ending in 9 days and 10 hours something. I think this challenge started from the 17th July and it will end at 14th of August, right? This the current month, for example. Okay, fine. If you completed all the learning collection within a challenge, so you will gain some trophies as well. So these challenges will be over here. And for example, if you complete a whole challenge just like this, because this is just a demo profile, it's not the original one, just for orientation. So don't go for everything about the profile. So if once you will complete this the specific challenge, so Microsoft will give you some trophy and it will display over here in your account that how many trophies you just have gained. It will show over here and you can those will be a kind of the huge certificates from the Microsoft and you can add them in your profile. Okay, fine. And let's after this section, I will end my presentation. So this is the last thing what I want to discuss. And before that, what else is in the student hub, that is most important thing I want to show you guys.
If I click on the Student Hub main page, so you will see that you can claim your Azure for Students benefits as well. If you are some university student and you are having some university ID, that is a kind of email ID on the university's domain. For example, you are from any of the universities, right? So university will give you some student ID based on their own domain, right? So you can claim using that email ID, that is called Claim Your Azure for Students Benefits. If I click on this option, so it will get you to that specific page. You can see Build in the Cloud free with Azure for Students, right? So Azure is a Microsoft Cloud platform that is a kind of portal. And my another speaker will explain about this as well. What is Microsoft Azure portal? So as a student, you can get $100 free credits throughout the year. So if you click on this start free journey, so from using by using the same profile account, the same Hotmail or Outlook ID, you can activate your Azure for free account. But you have to verify your university student ID or email ID as well. So once your email ID is verified, you can use this $100 free Azure credits without paying anything, without adding any credit cards or debit cards. Okay, fine. And one last thing, if you started the journey on Microsoft Learn and you learn a lot of things, so now you can go for the Microsoft certifications. For example, I click on this certification tab. You can see over here, Microsoft Learn, it's Microsoft certification. What is your specified area? If I click on the area, data analyst, or maybe AI engineer, or maybe administrator, something else. For example, I click on AI engineer. Browse for all certification. What kind of certification you want to appear in? For example, if you have learned a lot about the AI thing and now you want to have some Microsoft certification, so if you click on exam AI 900 over here, it is a kind of fundamentals. So here are some terms and conditions. The page is going to tell and how many score you want to pass this exam. So this is out of 1000. It's a 700 score out of 1000. If you want to have some study guide before appearing into the exam, you can go for here. If you want to have a look at how the exam will look like, so you can go to the just orientation exam sandbox. And here you can see, as I have talked at the start of the session, that please mention your exact area, just because the Microsoft having more leverages if we mention some specific areas. If we belong to Pakistan, we should mention the Pakistan area. Also, if this is $99 for United States, if you are in Pakistan, for example, if I am in Pakistan and if I go for the Pakistan, so Microsoft will give you the special discount if you belong the this specific region, right? So you can start your exam scheduling with Pearson VU, which is a very popular exam taking authority all over the world, right? So here, this is a kind of fundamentals exams. So in the case of fundamental exam, Microsoft will only charge you $55. And if I go for any of the associate level exams, for example, over here, if I go to the administration section, this is just an example. You can choose your own area of interest. And there are so many associate level exams as well. For example, this one is an associate level exam, or maybe this one, or maybe this one. Let's I let you know about something. For example, this one. And if you want to appear for exam MS 700, managing Microsoft Teams, and how will Microsoft charge for from the international student like United States or UK or something, Canada?
the exam fee is as a whole, it's $165 for international students. But if you are in Pakistan, so Microsoft will only charge $80 because of the region, right? So thank you very much. That's all from my side. And if you want to ask any of the questions, you may ask. Thank you very much. Thank you so much, Ms. Gulnaz Mushtaq. We really get most of the things from this presentation, and inshallah, we will implement those things about Azure and about Microsoft Learn. So, for more appreciation, I would like to call Atanya on stage. Assalamu alaikum. सो वो इस बारे में आपको मज़ीद वो करेंगे। तो बेसिकली इस वक्त हमारे साथ उस्मान साहब हैं, फिर देन वी हैव सर मुबीन साहब, देन वी हैव तारिक साहब, और उनके वही टॉपिक्स हैं बेसिकली जो कि माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड के लिए जो रेकमेंडेड थे। तो आप सबका शुक्रिया, और कोई भी सवाल हो तो आखिर में हर स्पीकर के आखिर में हम 5-5 मिनट का वक्त देते हैं, ताकि ऑनलाइन भी किसी का सवाल हो या ऑन साइट भी हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Rataula, for letting us know more about Microsoft Learn. All right, so we have another speaker who is again online, who is Mr. Usman Lodhi. He is a Microsoft certified trainer and passionate about delivering engaging and effective training programs in a variety of Microsoft technologies. So with expertise in Microsoft Azure fundamentals, administration, Microsoft 365, and endpoint manager. Currently, he is working as an MCT community regional lead for Pakistan. So let's welcome him. With a big round of applause. Am I audible? Sir Usman Lodhi, am I audible to you? Can you please let us know, Mr. Usman Lodhi?
वो बाद में आएंगे थर्ड स्पीकर तारिक is he here? All right. I guess he will be available after some time. So I'm having the another speaker, Mr. Tariq Khan, with over 12 years of experience in the IT industry. He is seasoned cloud and IT infrastructure professional who can design, implement, and manage complex enterprise solutions. Currently, he is working as a senior system administrator at Benchmetrics, where he leads a team of professionals in deploying applications on microservices and cloud platforms. So let's welcome him on stage for his more input on Microsoft Learning. Okay. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much for providing me this opportunity to address this session. And first of all, I'm really happy and I feel immense pleasure because this was a very long planned event to have this party or Microsoft event officially to be in Karachi. And for this, first of all, I would like to thank uh, a great thanks to Mr. Usman Lodhi and Ma'am Gulnaz Mushtaq that they provided this platform and they are managing or organizing these events in Pakistan. And secondly, a big thanks to Newports Institute also that they provided their premises to organize this event. And I'm really happy that we Microsoft professionals and MCTs are now on one platform and will be working together for a betterment of this region and especially Pakistan. So I won't take much time of you all. I know these you people feel bored. If the presentations are long, it's just 10 slides. And I would like to discuss a few technologies and how Microsoft is working in Pakistan and how our youth and university fellows can benefit from this and how can they excel in their career being a Microsoft professional.
So this is a short introduction of me. The man has already given. My name is Tariq, and I have around 12 years of experience, and I've been working on infrastructure side and system administration. And currently, I'm working as a senior system administrator at Benchmetrics and a cloud consultant and automation trainer at. Okay, so this is a short introduction of me, and part-time I'm working as a cloud consultant and Microsoft trainer in Cloud Pathfinder. So my specialties are Microsoft Azure, Microsoft Hyper-V, and automation tools, and Microsoft Azure DevOps. So currently, I'm an MCT, currently earned this certification, and I'm also for Microsoft Azure certifications from fundamental to Microsoft Azure architect. And if you want to follow me for updates and for Microsoft technologies, you can follow me on my LinkedIn by scanning this QR code. Okay, so that's really a very broad topic, that what is the future of Microsoft technologies in Pakistan, and how this you can say how this region can excel in technology. As when we compare our country from other countries in Asia, we feel that we do have a lot of talent, a lot of potential in our students, in our youth, but still why we are left behind from the other countries if we talk about the Asian countries. So to boost up your morale, or to tell you the things that how Microsoft is doing work, and how Microsoft has been partnered in Pakistan with a lot of organization, educational organizations, and also the corporate world. So in this presentation, we will surely discover about the latest trends, about the Microsoft technologies, and how they are impacting the economy of Pakistan, and how they are helping on a low level ground, or how they are resolving our daily life problems. So, as we all know, when we talk about the technology these days, we can see that everyone is talking about the cloud computing, everyone is talking about artificial intelligence, and everyone is talking about machine learning, data analytics, and a lot of things. So, and our students or our youth who are new into the market, they are very confused that what should we learn? From where should we start our career? Because because there are 100 of tools available in the market, and they are very confused that from where we should start our career, what should we learn. Either we should go to the artificial intelligence, or machine learning, or data analytics, or cloud computing. And even in cloud computing, it is a whole world: infrastructure side, network side, databases, security, and a whole new world. So my suggestion for them is that just explore all the things, and whatever you feel like, okay, that's the thing which I am much more interested, and that's the thing where I can go, just go for that. Because here in Pakistan, we follow the suggestions of our friends. यार मेरे दोस्त ने कहा AI कर लो, इसमें स्कोप है. That's nothing. The problem is, in whatever field you have interest, just go for that. And that's all about the cloud. So
Now we will talk about how Microsoft is helping to resolve real world problems in Pakistan. Maybe we don't know, but Microsoft is always there to help our people in Pakistan. First of all, education system. When we talk about the infrastructure of education system in Pakistan, it has a really bad image internationally. But Microsoft is there helping us. How Microsoft has partnered with government educational bodies, and they are providing top-notch their courses, their certifications, and their mentorship to the students of Pakistan with free of cost. As Gulnaz has already told us that when we go on Microsoft Learn and we select our certification, we can see that there is a special discount for Pakistan region to attempt those exams. In the same way, Microsoft courses and the trainings in Pakistan, they are a lot of times they are free of cost for the fundamental level. But when we go about the associate and architect, obviously those are paid, but not as much fees as in other countries. The second thing, providing healthcare in remote areas. How they are providing a telemedicine technology through a telemedicine technology. They are partnered with Aga Khan University and Hospital and providing healthcare services to the remote areas of Pakistan to have better health services to the areas who are underprivileged. Now, what's the future vision? How through Microsoft we can resolve our ground problems in reality. Number one, as we know that Pakistan is an agricultural country. Okay, so we need something for farmers. Now, here's the thing: we have Microsoft Azure IoT, Internet of Things. How that Internet of Things can resolve the problems of agriculture or for the farmers through that technology. There will be sensors who will be observing the humidity, the temperature, and the other things related to the field. And that data will be provided onto the cloud. Okay, and from there, through the data analytics, the powerful suggestions or the more useful suggestions will be provided to the farmers so that they can maintain those things in their fields to provide much more crops from their field, like rice or grain or other crops. Number two, the biggest, or you can say one of the biggest problem of Pakistan, specifically in the big cities, and that's the traffic problem. Now, how we can solve this traffic problem? We can solve this traffic problem through Microsoft technologies by implementing artificial intelligence and through those techniques we can see that there is a resolution into the congestion of the traffic. The traffic lights or traffic signals will be automated. So right now, what we can see that if the road is empty, still there is a traffic signal operating in the same way. But when we implement AI to those traffic signals, it can see that on which lane there is a traffic congestion, so that that traffic signal or that traffic light will be a more like green signal, so that the traffic congestion can be removed. So these are the very basic things I'm talking about. There is much more. These are very broad topics, but to give out an idea that there is a much more potential in Pakistan to implement Microsoft technologies. Now, when we talk about the Microsoft technologies, the first question comes from youth is that uh, like what's the growth? How can we grow in Pakistan if we are in the tech industry?
Most of the people, most of the students say that there is no scope or there is nothing in Pakistan. But what I say, the things which you can do in Pakistan, you can't do in all over the world. You have a very big potential to do the things. Microsoft Technologies has a broader way, specifically for the artificial intelligence, data analytics, and machine learning. And through those things, you can resolve a lot of problems. If we talk about the growth, we can see that the developers, Microsoft developers, were only 5,000 if we talk about late 2017 or 18. But the figure has eminently increased through the time, and into 2023, it is a prediction and some rough facts that there are around 25,000 Microsoft developers in Pakistan. There is a big revolution came, if we talk about from 2017 and 18, the revolution of cloud computing. Although this technology or this terminology is not so new, it's a really old terminology, but the implementation or the usage of these things has been suddenly increased from 2018. A lot of people came towards this technology all over the world, and so goes for the Pakistan. In the same way, developers has increased, the businesses has adopted cloud computing, and the numbers goes on from 10% to 40% in all over the Pakistan. So it is a very exponential growth across the region, across Pakistan, that Microsoft has seen, and they are now investing in our youth, in their education, so that they can produce much more professionals, and they can do a lot of wonders for the betterment of Pakistan. Okay, now when we talk about the tech market of Pakistan, these are the numbers which I already mentioned. That in cloud computing, you can see an exponential growth from since 2019 to 2023. These are just the numbers, or you can say the predicted numbers, the percentages which we have to achieve in 2023 according to the different survey sites or survey companies all over the world. We can see that cloud computing, artificial intelligence, machine learning, development community, and economic impact. This Pakistan is a very big market. We can see that in 2017-18, the market was around 500 million, but now the tech market of Pakistan is around 2.3 billion. Why? Because everyone is going to know that, okay, adopting technologies, working for that, you will be earning a lot. And we can see that there is a $2.3 billion of industry has been built by Pakistan in just 5 to 6 years. So we can expect that in next 5 to 10 years, this industry might be grown to around $10 billion of dollars. So my suggestion would be to learn technologies as much as you can. Just focus on that, and inshallah you will be doing wonders in here. Now concluding my presentation, there is a question arise that why we can see that much growth in the tech industry. Obviously, there are a lot of factors, but the main factors are the increased speed of internet. Although we are still a lot behind from the outside world. Outside world means the first world countries, but still we do have a lot good speed of internet. Everyone has smartphones, okay, and we have access. To the latest courses, latest trainings, which world is providing to the other countries. So, concluding, the future of Pakistan in my eyes, or what I can see, that
really very bright. When I started my career back in 2009, I know there are more senior people are here who have started their tech journey since 19s or 2000s. But since I started, I have taken hundreds of interviews. What I feel that there are people who are certified, there are people who have a lot of experience, but still they are complaining that we don't get work, we don't get job. The only thing which I have observed is that their basic concepts are not clear, or maybe they have just cleared the certification by learning dance, although that's a factor, but still I would suggest that just clear your concepts, strong your basic concepts. Upon that, build your career, learn the technologies, and do wonders. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Tariq. I was really inspired throughout your presentation. It was really great. All right, we have Mr. Usman Lodhi. Due to some internet issues, he was not able to connect with us. Now he's here, so have a big round of applause for him. Let's welcome him. Assalamu alaikum. Sir. Am I audible? Yes, you're audible. Tawla, just please turn on the camera only, because first of all, I have to speak with the audience and then I'll present my session. All right, all right. जी सर, you may begin. आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ? Yes, I can. जी अब visible है. Thank you very much. I will never speak in English. मैं उर्दू में ही बात करूँगा, क्योंकि ये हमारी एक कौमी ज़ुबान है. ये बेसिकली आफ्टर पार्टी है, स्पेशली कराची के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि कराची में एक माइक्रोसॉफ्ट का इवेंट होना चाहिए. गुलनाज ने होपफुली आपको एक क्विक ओवरव्यू दिया होगा एमसीटी कम्युनिटी पाकिस्तान का. मैं भी इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड करूँगा. बेसिकली हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, मेरा जो कम्युनिटी का एक्सपीरियंस है वो तकरीबन आई कैन से दैट कि मैंने कम्युनिटी की वर्क स्टार्ट किया था 2017 से. तो मैं कम्युनिटी में 2017 से 2017 से मैं कम्युनिटी में हूँ, और मैं कम्युनिटी इवेंट्स करवा रहा हूँ, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करवा रहा हूँ. लेकिन कोविड के बाद एक सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि बहुत सारी चीज़ों ने ग्रो किया, बहुत क्विकली टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया, जिसका असर पाकिस्तान में शायद उस तरह नहीं आया जिस तरह दूसरे मुल्कों में आया. तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने अपनी कम्युनिटी को अपग्रेड करना है, हमने अपने लोगों को स्किल अप करना है कि वो आगे आएँ और अपना काम कर सकें. तो हमने अपनी एमसीटी कम्युनिटी पाकिस्तान को इन्हेंस किया, और हमने कोशिश की कि हर एस्पेक्ट से, क्योंकि एमसीटी का अगर नाम लेते हैं तो एमसीटी का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर. तो हमने ये ट्रेनर स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं बनाई. हमने कोशिश की कि जहाँ पे भी कम्युनिटी में काम किया जा सकता है, जिन इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं, हम उन इश्यूज़ को एड्रेस करें. हमने ट्रेनर्स के लिए काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल में हमने पाकिस्तान में एमसीटी ट्रेनर्स को एमसीटी प्रोग्राम को रीशेप कर दिया. वो ट्रेनर्स जो कि बहुत छोटी ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे थे, माशाल्लाह वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ले रहे हैं और दे आर ग्रोइंग वेरी वेल. हर ट्रेनर मेरे ख्याल से इस टाइम पे एम्पावर्ड है और अपनी अर्निंग कर रहा है. एक इशू ऐसा आया हमारे पास कि लर्नर्स के हवाले से, कि लर्नर्स के लिए कोई चीज़ नहीं है, हमें लर्नर्स के लिए काम करना चाहिए.
तो हमने इनिशिएटिव लिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट से बात की, तो हमने इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान कि हमने पाकिस्तान का लर्निंग रूम हमने एक्सेस करवाया। लर्निंग रूम बनवाने के बाद लर्निंग रूम को हमने एक्टिव किया और लर्निंग रूम पे हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी लर्नर आके कोई भी चीज़ उसे रिक्वायर होती है, कोई टेक्निकल इशू होता है, जॉब से रिलेटेड टेक्निकल इशू होता है, कोई करियर पाथ चाहिए होता है, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए होती है, वो लर्निंग रूम पे आए, क्वेरी पोस्ट करे, उसे उसकी फुल सपोर्ट मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी हैं जो कि हमने पाकिस्तान में हमने की और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कराची का इवेंट बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ऑन साइट करवाया जाए। हमने रिक्वायर था कि कोई यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आई एम रियली थैंकफुल अताउल्लाह कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ख़ुद वॉलंटियरली हमें कहा, और आई एम रियली थैंकफुल टू अताउल्लाह कि उन्होंने कहा कि उस्मान भाई ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है, उन्होंने लिया और आज हम उसी के सिलसिले में यहाँ पे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और वो लोग जिन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेसिकली मैं जिस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा हूँ वो एक शायद कॉमन टॉपिक आपके लिए हो प्रीवियसली, जो कि जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक इंटरेक्शन है एक्टिव डायरेक्टरी और सर्वर के हवाले से। कोविड के टाइम पे दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है। एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, स्टडी फ्रॉम होम हो रहा है, हर चीज़ वर्क फ्रॉम हो रही है। और कंपनीज की रिक्वायरमेंट है कि जो भी हम डिवाइस किसी एम्प्लॉय को दें वो कंपनी मैनेज्ड हो, कंपनी के एसओपीज के मुताबिक हो। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? बताओ ना, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir, it's visible now. ओके, No, थैंक it's यू, not visible. Now it's visible. थैंक यू। तो माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड आफ्टर पार्टी कराची, एमसीटी कम्युनिटी पाकिस्तान, एंड स्पेशल थैंक्स टू अताउल्लाह के जो होस्ट करें यहाँ पे ऑन साइट, और थैंक यू वेरी मच जिन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया 2 अकाउंट से। तो आज का जो टॉपिक मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो डिवाइस मैनेजमेंट विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। मेरा नाम है उस्मान लोधी, मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मेरी ट्रेनर जर्नी स्टार्ट हुई थी 2013 से। मैं 2013 से कंटिन्यूसली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और स्टिल पढ़ा रहा हूँ। बीइंग अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ साथ मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर रीजनल लीड पाकिस्तान हूँ। गुलनाज ने काफ़ी सारा आपका इंट्रोडक्शन दिया होगा रीजनल लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, तो मैं अभी ज़्यादा नहीं करूँगा। और अलॉन्ग विद द टाइटल ऑफ रीजनल लीड आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग एक्सपर्ट एज वेल। तो टॉपिक ये है कि डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली हर कंपनी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमने अपनी डिवाइसेस देनी है एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ उन डिवाइसेस को कंपनी के मुताबिक यूज़ कर सकें, वो फ्रीली यूज़ ना करें, डिवाइसेस मॉनिटर हो और कंपनी के मुताबिक चलें, जिस तरह कंपनी चाहती है उसके मुताबिक चलें। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, वो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, और उसे हम एंड पॉइंट मैनेजर भी कहते हैं। तो एजेंडा ये है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, व्हाई माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, व्हाई डिवाइस मैनेजमेंट, एंड व्हाई क्लाउड बेस्ड डिवाइस मैनेजमेंट। What is Microsoft Intune? Microsoft Intune is a cloud-based endpoint management solution. It manages users' access and simplifies apps, device management across your device, across your many devices, including mobile, desktop, and computers. कोविड के बाद एक ट्रेंड जो चला है वर्क फ्रॉम होम का, बहुत सारे लोग कंपनी से निकल के वर्क फ्रॉम होम पे चले गए। एक बहुत बड़ा सोल्यूशन आया कि जी अगर किसी ने यूएस में काम करना है तो यूएस को बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम मतलब पाकिस्तान से लोगों को हायर किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को हायर किया। जब हायर किया जाता है, हायरिंग के बाद वो कंपनी डिवाइस प्रोवाइड करती है कि भैया आप अपनी डिवाइस पे काम ना करें, क्योंकि हमें आपकी डिवाइस का आइडिया नहीं है कि आपकी डिवाइस की कैपेसिटी क्या है। हम आपको डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, आप उस डिवाइस पे काम करें, लेकिन शर्त ये है कि डिवाइस कंपनी की क्लाउड कंपनी के साथ सिंक्रोनाइज होगी, कंपनी उसको मैनेज करेगी, आप कंपनी के एसओपीज के साथ मैनेज करेंगे। तो बैकएंड पे एक टूल चलता है जिसे हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून।
माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून में डिवाइस को इनरोल किया जा सकता है और इनरोल करने के बाद उस डिवाइस को मैनेज किया जा सकता है। किस तरह मैनेज किया जा सकता है मैं डिस्कस करूंगा। डिवाइस मैनेजमेंट और डिवाइस एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी हो सकती है। अब सवाल ये था कि क्या सिर्फ हम विंडोज डिवाइसेस को ही मैनेज कर सकते हैं, तो उस आंसर था नो, क्योंकि एम्प्लॉयज सिर्फ विंडो डिवाइसेस पे काम नहीं करते। एम्प्लॉयज के पास मैक भी होता है, एप्पल भी होता, मैक भी होता है, उसके बाद एंड्रॉयड डिवाइसेस भी होती हैं। तो इंट्यून सब डिवाइसेस को एक प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर सकता है। अब सवाल ये है कि व्हाई इंट्यून। इंट्यून से पहले एक सोल्यूशन हुआ करता था, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एससीएम करता था कि यही काम एससीएम करता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि एससीएम को होस्ट करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डिप्लॉय करना पड़ता था। कि एक सर्वर है, सर्वर के अंदर हमने स्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है और जो डिवाइसेस विद इन कंपनी है उनको मैनेज किया जा सकता है। अगर बाहर से किसी को एक्सेस करना है तो वीपीएन बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत सारे मसाइल थे। तो जब अब एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, एम्प्लॉय को सोल्यूशन देना है, तो सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन चाहिए कि क्लाउड पे बैठते हुए, क्लाउड को यूटिलाइज करते हुए हम डिवाइसेस को भी मैनेज कर सके, डिवाइसेस पे जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही हैं उनको भी मैनेज कर सकें। तो इसके लिए है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एक क्लाउड बेस्ड ऐप है जो कि मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट भी करती है और मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी करती है। वही काम जो एससीएम ऑन साइट, जिसके लिए हमें एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, वही काम इंट्यून करता है, लेकिन इसके लिए हम स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर लेस क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्यों है, हमें डिवाइस मैनेजमेंट क्यों चाहिए? कंपनी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है डाटा प्राइवेसी, और डाटा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, डाटा किसी गलत हाथ में न जाए। तो ये चीज हम मैनेज कर सकते हैं इंट्यून से, और डिवाइस को इनरोल करने के बाद। उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट होती है। कंपनी जब भी इंप्लॉय को एक लैपटॉप देती है, कंप्यूटर देती है, कोई भी चीज प्रोवाइड करती है, कोई भी डिवाइस प्रोवाइड करती है, कंपनी चाहती है कि इंप्लॉय उस डिवाइस पे वही एप्लीकेशंस यूज करे जो कंपनी चाहती है। क्योंकि डेफिनेटली कंपनी ने लाइसेंस परचेज किए होते हैं और कंपनी चाहती है कोई भी इंप्लॉय जो है वो पायरेटेड डिवाइस या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करे। तो कंपनी एंड पॉइंट मैनेजर से उन एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करके इंस्टॉल करवा सकती है किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय की डिवाइस के ऊपर। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड यूजर एक्सेस। हर कंपनी चाहती है कि हमारा जो यूजर है, हमारा जो एम्प्लॉय है, वो लिमिटेड वे में डिवाइस को यूज कर सके। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय फ्रीली यूज करेगा, हो सकता है वो मिस यूज कर ले और डिवाइस हो सकता है वो हैक हो जाए या कोई भी उसके साथ मसला बन जाए डिवाइस के साथ। तो हर कंपनी चाहती है कि डिवाइस हमारी लिमिटेड यूज हो और कंपनी के इस्तेमाल के लिए ही यूज हो। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से। और उसके बाद हो सकता है कि इम्प्लीमेंट कंपनी पॉलिसीज ऑन डिवाइसेस। कंपनी जो भी पॉलिसी चाहे डिवाइस लगा सकती है। किसी चीज की एक्सेस देनी है, किसी एक चीज की एक्सेस ब्लॉक करनी है, तो वो चीज इससे पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद वाई क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट। क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट का यह सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट मैनेज किया जा सकता है। पहले ये होता था कि जब एससीएम का टाइम होता था, एससीएम में बाकायदा एक नेटवर्क बनाया जाता था, एक हम स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट थे। एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद एक बाकायदा टीम होगी, तो वो ही सारा कुछ मैनेज करेगी। अब ये स्ट्रक्चर पे हम डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी डिवाइस हम ओवर द इंटरनेट बैठ के मैनेज कर सकते हैं। आजकल अगेन जो ट्रेंड है वर्क फ्रॉम होम का, यूएस बेस्ड कंपनी, यूरोपियन बेस्ड कंपनीज अगर पाकिस्तान में हायरिंग कर रही हैं, वो डिवाइसेस को मैनेज कैसे कर रही हैं? डेफिनेटली वो बंदा वहां पे ना शायद कभी ना मिला हो उनके साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, वो उनसे मिलते नहीं है, लेकिन कंपनी जो उनको डिवाइस प्रोवाइड करती है वो कंपनी मैनेज कर रही होती है। कैसे मैनेज कर रही होती है? वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि स्ट्रक्चर नहीं होता, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनरोल की जाती है डिवाइस इंट्यून में, और कंपनी इजीली उस डिवाइस को मैनेज कर सकती है। उसके बाद आ जाता है नो ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत नहीं है।
SCCM की ज़रूरत हमें नहीं रही फिर, क्योंकि सबसे ईजी सोल्यूशन है इंट्यून। और उसके बाद जब भी किसी एम्प्लॉय को ऑन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस करना होता था आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक VPN रिक्वायर होता था। यहाँ पे VPN की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा कुछ इंटरनेट के ऊपर इजीली एक्सेसिबल है और हर चीज को पॉसिबल किया जा सकता है। तो मेरी सजेशन ये होगी कि मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आप IT में काम करना चाहते हैं, आपका बिजनेस भी होगा, आपके बहुत सारी चीजें होंगी, डेफिनेटली आप लोग काम कर रहे होंगे, एक टूल इसको सर्च लाजमी करें। मैं इसकी कोर्स का लिंक आपके साथ भेज देता हूँ, आपको भेज देता हूँ। इसको स्टडी करें, और स्टडी करने के साथ साथ अगर आप कंपनी रन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी और आपकी अपनी कंपनी की डिवाइसेस को मैनेज करना चाहते हैं, इस टूल को लाजमी यूज करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। क्विक क्वेश्चन? मैं कोर्स का MDM के पूरे कोर्स का आपको लिंक भेज रहा हूँ। अगर कोई स्टडी करना चाहता है MDM को, वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाके इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को इजीली स्टडी कर सकता है। लिंक मैंने आपको चैट में भेज दिया, आप काइंडली इस लिंक को लाजमी देखिएगा। जी, अभी तक कोई सवाल? Sir, kindly share the link on the screen. ओके, मैं स्क्रीन पे से शेयर कर देता हूँ। Thank you so much, Mr. Usman. थैंक यू वेरी मच। All right, so we have a last speaker here, who is Mubeen Ahmad, who is the Vice President at Dastagir. As everybody knows, that Dastagir is award-winning B2B e-commerce marketplace that uses technology to connect informal retailers with manufacturers and wholesalers. So he will be shedding light on the fascinating topic of generative AI and Azure. Am I right, sir? So let's give him a round of applause as he takes the stage right now.
इसको पीपीटी पे बोले ठीक देखिए इस ऑनलाइन से लग रहा पूछ लें अगर विजिबल हो ऑनलाइन सबको विजिबल सही हो रहा है entire window ये बड़ा कर नीचे शेयर ठीक बता दो ठीक है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अस्सलाम वालेकुम तो before we get started let's have a brief introduction about what we have here in front of us तो आप में से कौन से लोग हैं जो भी प्रोफेशनली कहीं जॉब्स कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर और कौन से लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं so nice अच्छा और how many of you are developers and how many of you are basically DevOps side the developers can raise their hands first developers and QAs and DevOps side अच्छा सही what about the rest बाकी लोग क्या करते हैं आप क्या करते हैं बैंकिंग में ओके सही है ठीक है आप स्टूडेंट ओके सही है व्हाट अबाउट यू गाइस ऑन द बैक आप लोग मोस्टली क्या करते हैं ओके सही है ठीक है तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन एनी माइक्रोसॉफ्ट इवेंट टू बी प्रेजेंटिंग आई हैव प्रेजेंटेड इन अदर इवेंट्स तो थोड़ा सा मुझे इतना ऑडियंस का आइडिया नहीं था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एन ऑडियंस विल हैव बट the objective of this presentation was to get an understanding of what generative AI is. Microsoft as a company has invested a lot in this and why they are investing in this. What's the ultimate goal? Where are we heading in future? And a little bit of a practical overview of how we use generative AI with Azure. We are not able to give a complete end-to-end demo because of the time constraints and service constraints, but the focus here is to just give you a flavor of how generative AI works, what's the concept of generative AI, and why it's been so much hyped up and so much important. So, anybody of you know what generative AI is? No? So, before we start, let me give you a brief introduction of who I am. So, as the presenter role that I'm Mubeen, I'm the Chief Architect and VP Engineering at Distillery. I have, alhamdulillah, 4 kids, and I'm a hardcore developer still after working in industry for around 20 plus years, and very fond of physical sports. So, usually Saturdays are dedicated to sports, and I've taken this time for this event specifically to collaborate with you guys. In terms of experience, I have around 18 plus years of experience. I've started my journey way back in 2001. Started from Microsoft, worked in Microsoft, then went into open source, then went into ERP systems, Dynamics. I'm also a certified Dynamics 6 developer. Worked in very good companies like Folio 3, Sima. I've also been teaching in different universities as a visiting faculty. Currently I'm also an AWS community builder. I'm a mentor. I also help students guideline their career paths, help them scale up their careers, guide them on how to basically pursue their objectives, help startups in scaling, designing their processes, help
companies running their processes, running their setups in a much productive way. So these are some things that I do other than my primary role. What are we trying to cover here in this session? So the primary purpose of the session is to basically get a good idea of what generative AI is, and the timeline. Then we'll discuss the timelines and the key breakthroughs of Microsoft AI, how it has evolved. Then we'll talk about OpenAI and Microsoft, what it is, how it works, what are the key aspects of it, and how we use Azure and Microsoft OpenAI with Azure. So these are the core areas that we'll be focusing on. Okay, so let's talk a little bit about generative AI. Chat GPT तो आप लोगों ने सबने यूज किया होगा, I hope. सही है? तो there are lots of tools right now in present. Facebook आप यूज करते हैं, Twitter यूज करते हैं, lots of XYZ tools. Why Chat GPT has become so buzzword and so important in life? Anyone आपकी जिंदगी में Chat GPT ने क्या positive या negative change लेकर आए? Anyone? जहाँ पे हम बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते थे और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते थे, चैट जीपीटी की वजह से हमारे पास वो टाइम काफ़ी कवर हो गया। लाइक हम अगर कोई एक सॉल्यूशन के लिए सर्च कर रहे होते हैं तो वो मल्टीपल जगहों से अपनी एआई की मदद से, जैसे पर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जो मौजूद है, उसकी वजह से वो हमारा काफ़ी टाइम सिक्योर कर देता है। फिर हम उसमें मजीद उसको सिर्फ हमें ये देखना होता है कि जो उसका आंसर है वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो हमारा काफ़ी हद तक टाइम जो सेव होता है। ठीक है। Anyone else who uses Chat GPT? जी। सही है। आप Chat GPT किस लिए यूज करती हैं? कोड वगैरह के लिए? ओके, सही, ठीक है। और anyone else? जी। बेसिकली मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करता हूँ फॉर माय डिजाइनिंग पर्पसेस। मतलब उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि अगर किसी कंपनी की जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगता हूँ तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। पहले वही इंटरली बात की हमें मुख्तलिफ लिंक्स को घूमना पड़ता था, जबकि अब जो भी AI चैट जीपीटी ले लें, बार्ड ले लें, बिंग ले लें, तो वो मतलब जो बिल्कुल कंसाइज इंफॉर्मेशन होती है वो सब जगह से लेकर आती है, और इसकी वजह से अब हमें डिजाइनिंग में और डीबगिंग में खासतौर पे ट्रबल शूटिंग में बहुत कम टाइम लगता है। So that's how it is making our life easier. जबरदस्त। तो as you said, क्योंकि you are more on the industry of technology side या डिजाइनिंग साइड या वो, तो हर बंदा अपनी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से चैट जीपीटी को यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली AI is here in this world for around more than a decade. सही है। मुझे अच्छी तरह याद है when I was studying in my university, I had a course on AI. सही है। मैंने न्यूरल नेटवर्क्स भी पढ़ा था, मैंने AI के बेसिक्स भी पढ़े थे इन माय बैचलर्स। ऑल्दो उस वक्त जब हम टीचर से पूछते थे कि कहाँ यूज होता है, तो वो ना उनको पता होता था ना हमें पता होता था। सही है। एंड वी वर जस्ट स्टडीइंग इट फॉर द सेक ऑफ अ कोर्स। सही है। बट it's there for a lot of time. It's very old technology in on the basis of it. What generative AI is basically is it's making our text, or what I would say is कि human readability या human mentality या human cognitive को जो है वो transform कर दे into a real based information that helps you directionally to reach to a point जहाँ पे आपकी वो नीड फुलफिल हो जाए। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि करंटली भी आपकी नीड पूरी हो रही थी अगर आप चैट जीपीटी को डालें। इन्होंने आर्किटेक्चर डिजाइन करना था, you used to go to Google और then search out 10, 12, 13 आर्टिकल्स, कहीं से पढ़ते थे, कुछ करते थे, और फिर वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके जमा करके उसको कंसाइज करके एक डिजाइन या आर्किटेक्चर डिजाइन करते थे। ये कोड लिखते थे, कोड लिखने के लिए इनको हेल्प चाहिए होती थी, प्रॉब्लम स्टैक आउट हो जाते थे, XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते थे, वहां से एक्सट्रैक्शन करते थे, उसको वैलिडेट करते थे, उसको कंसाइज करते थे और उसको लिखते थे।
the whole process of what our mind is doing in terms of validating, in terms of reviewing, in terms of consolidating information, that is what generative AI has done for us. सही है? तो अब, for example, if you're writing an email of or a reply of some text, you don't really have to think about कि यार इसमें THERE देर लगेगा या THEIR देर लगेगा, सही है? क्या इसमें मैं past tense यूज करूं या इसमें present यूज करूं, क्या मेरी टोन होनी चाहिए, क्या मैं, what I need to do right now is tell the generative AI system whatever it is कि यार ये मैं कहना चाहता हूँ, सही है, ये context है, this is what I have, please generate something for me. And then based on the abundance of historical data that is in the primary system, model system जिस पे वो train हुआ है, वो उसके basis पे, उस theories के basis पे आपको वो textual information, visual information या XYZ whatever it is generate करके देता है. So that's a big revolution that we are in, because एक तो ये चीज होना itself और उसकी adoption towards industry. जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो I'm quite sure you've heard it that was one of the fastest adopted tool in the world. सही है, उसने फेसबुक को वो मार्जिन से बीट किया, बाकी सारे टूल्स को बहुत मार्जिन से बीट किया. मतलब इट्स समथिंग that revolutionized our minds के, and interface is very basic, very crude किस्म का इंटरफेस था. सही है, फेलियर्स बहुत ज्यादा थे, fail over fail, but still people were very intuitive towards that because it gives a system human interaction to it. हम हमेशा कंप्यूटर को कंप्यूटर ही समझते हैं, मैकेनिकल सिस्टम, but when it start behaving like a human being, so then it's become a different game. सही है, कभी भी आपने कभी भी किसी चैटबॉट से 1 घंटा बात नहीं की होगी, लेकिन I have found people who spend 1 hour talking to ChatGPT, discussing their personal problems with ChatGPT, and ChatGPT really giving them very good, interesting, intelligent responses around that. सही है, तो that is what revolution is. सही है, and the good thing about this is कि ये revolution सबने adopt किया, all the big companies, all the small companies, everyone. एक McKinsey की मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें adoption rate दिखा रहे थे industries का, तो almost every industry in the world, every industry I'm talking about, has adopted to 20 to 50% adoption of generative AI. सही है, किसी ने हर इंडस्ट्री ने अपने अपने लेवल पे इसकी adoption की हुई. So when we talk about generative AI, when we talk about chat GPTs, when we talk about other platforms, this is not something that is industry specific. This is not specific to developers, engineers. Yeah, this is something that is for everyone. And whoever is not doing it probably will feel the pain in 2-3 years when this will be something a norm, like a norm to us. सही है, तो ये generative AI की definition है that I took from McKinsey. इसके generative AI describes algorithms such as ChatGPT that can be used to create new content, including audio code, images, text, simulation, videos. Recent breakthroughs in the field have potentially drastically changed the way we approach the content creation. Right? Previously, the way we used to create content was to look into एक तो human generated content होता था. We used to look into that content and generate our own content. Now that has changed. So now that new generation content is not by humans mostly. It's by the automated systems based on the automated historical data that it has. So that is what revolutionized AI and industry in general. So this diagram is very crude and basic. So yeah, that is basically not how generative AI in general works, in depth. Again, just at a top level to understand how the concept works, थोड़ा सा इसको बताने के लिए. So we have data in a sense of question, data in a sense of information, data in the sense of an ask. So yeah, वो हम provide करते हैं training के लिए. Now, when we talk about machine learning या किसी भी model के ऊपर बात करते हैं ना, तो training is a very essential part of any model training. सही है, until unless model किसी चीज पे train नहीं होगा, वो model उसको respond back आपको उस तरीके से नहीं करेगा. तो modeling होती है, फिर उसके against models जो है वो generate करते हैं documents, images, chats, messages, replies, XYZ. सही है, और फिर उस data को हम test करते हैं.
और फिर हम अपने मॉडल को रीट्रेन या रीइवॉल्व या रीइवैल्यूएट करते हैं। सही है, दैट इज हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। अगर मशीन लर्निंग, अगर आप लोगों ने मशीन लर्निंग एक एक कुछ पढ़ा है ना, तो इसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि मशीन्स को जब आप इवॉल्व कराते हैं ना, तो यूज द सेम पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड एवोल्यूशन। सही है, जब एक बच्चे को, आप छोटा बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले क्या चीज सिखाते हैं? बा, बू, बेसिक लेवल वर्ड्स सिखाते हैं ताकि वो बोलना शुरू करे। फिर देन यू ग्रो, फिर वो एजुकेशन, फिर लर्निंग, फिर लर्निंग एंड फिर लर्निंग। सही है, दैट इज हाउ अ मशीन लर्निंग मॉडल्स आर ट्रेन्ड। सही है, आप उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं, देन उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन फीड करना शुरू करते हैं। It's much faster as compared to human being, but the process is more or less similar. And the good thing about machines is कि वो भूलता नहीं, humans भूल जाते हैं, वो भूलता नहीं, so that makes it much more smart. सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, जिस तरह humans में प्रॉब्लम है, जब आप ह्यूमन पैटर्न्स को लाकर मशीन में डालेंगे ना, तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स भी कुछ मशीन्स के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली मशीन्स गिव यू एक्यूरेट आंसर। सही है, आप उसको बोलेंगे 2+2, वो आपको हमेशा 4 दिखाएगा। सही है, प्रॉब्ली आप एक बच्चे को जो अभी स्कूल में है, उसको भी 2+2 बोलेंगे तो वो आपको 3 बोल देगा, 1 बोल देगा, हो सकता है 2 ही बोल दे। सही है, बट एज ही ग्रो अप ही विल प्रॉब्ली गिव यू। बट अगर यही नंबर मैं बहुत बड़ा कर दूंगा तो देन द ह्यूमंस अगेन विल गेट द अदर। तो इसके अंदर भी when we talking about machine learning and cognitive AI, तो जो रिजल्ट्स आते हैं दैट्स नॉट 100% एक्यूरेट। सही है, फॉर एग्जाम्पल आपने इमेज जनरेट करवानी थी, इमेज जनरेट करवाई, लेकिन उस इमेज के पिक्सल कलर्स बहुत अच्छे नहीं थे, उस इमेज की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी नहीं थी, the want we have was not what was delivered by the system. सही है, मुझे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट करवाना था ऑन जो है किसी भी मेडिसिन के ऊपर, वो उस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर नहीं आया जिस तरह की इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में मुझे रिक्वायर्ड। तो दिस इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसमें वो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसी में एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व करता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का। सही है, तो जिस तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास क्यूए इंजीनियर होते हैं, जिस तरह हमारे डेवलपर्स होते हैं, विद एआई एक कॉन्सेप्ट नया इवॉल्व हुआ है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का। एंड व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आर बेसिकली, अगर आप ये ऊपर ट्वीट पढ़े ना, दैट्स अ वेरी गुड ट्वीट। सही है, द हॉटेस्ट न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ इज इंग्लिश। सही है, so the prompt engineers are basically nothing, are people who can identify and write good keywords. सही है, जो भी जनरेटिव एआई होती है या जो भी कॉग्निटिव एआई के एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली वर्किंग ऑन द कीवर्ड्स। सही है, क्या कीवर्ड्स राइट टाइम पे राइट लोकेशन पे आप यूज करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स उसमें से मिलेगा। सही है, तो these are professionals in an industry. ये मैं prompt engineer जो है ना, ये imaginary role नहीं है, this is currently a role in lots of organizations जो के लोग hire कर रहे हैं। सही है, तो what they do is, professional prompt engineers जो होते हैं वो figure out करते हैं matter को, यानी कि content figure out करते हैं कि AI को मैं क्या information pass on करूं जो मुझे best possible information extract करके दे। सही है, तो वो vocabulary for that model, वो keywords for that model, उस चैटबॉट के लिए क्या इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है, उसको क्या स्पेसिफिक्स मुझे प्रोवाइड करनी है, वो डिजाइन करते हैं ये लोग। सही है, तो दैट्स अ डिफरेंट कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशनल रोल है जो कि उस जीपीटी को यूज करते हुए या उस एआई मॉडल को यूज करते हुए उससे डेटा एक्सट्रैक्शन करना। तो इसी एग्जांपल है जिस तरीके से ये कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या करते हैं कि टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस, सही है, एग्जांपल्स पास ऑन करता है, कुछ डेटा देता है, उसके रिस्पांस में लैंग्वेज मॉडल्स उसको रिटर्न कर देते हैं आउटपुट। आउटपुट जो होता है उसको यूजुअली हम देते हैं द वर्ड कंप्लीशन। कंप्लीशन इज अ कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर कि आपने जितना इनपुट दिया उसने इसको प्रोसेस किया, उसके ऊपर जो उसने रिजल्ट आउटपुट दिया इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज या व्हाटएवर इट इज, वो कंप्लीशन कहलाता है। अब वो कंप्लीशन कितना बेहतर है, यानी कि कितना सक्सेसफुल है, कितनी एक्यूरेसी है, दैट इज समथिंग एल्स, वो एक सेपरेट डिस्कशन। लेकिन जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन इनपुट होगी, जितने अच्छे कीवर्ड्स होंगे, सिमिलरली उतना ही अच्छा कंप्लीशन आपके पास निकल कर आएगा। फॉर एग्जांपल, आप कोड लिख रहे हैं, आपने कोड लिखते हुए बोला कि मुझे एक फंक्शन बनाना, सही, तो वो एक जनरल खाली फंक्शन बना देगा, दैट इज नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज। अगर आप उसको मजीद इंफॉर्मेशन देंगे कि मुझे एक ऐड का फंक्शन बना दो जो कि
इंटीजर्स को भी सपोर्ट करे, जो कि आपके पास फ्लोट्स को भी सपोर्ट करे, तो नाउ दैट्स मोर प्रॉम्प्टिंग इंफॉर्मेशन जिसको वो लेकर और बेहतर तौर पे कोड कर सकते। सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की बात करते हैं, इमेज डिजाइन की बात करते हैं, तो इमेज डिजाइन में आप जितनी बेसिक अच्छे कीवर्ड उसको देंगे वो उतनी बेहतर तौर पे उस इमेज को डिजाइन कर सकते। तो दिस इज अ वेरी की रोल जो कि आगे और ज्यादा इवॉल्व करेगा इन द फ्यूचर। अच्छा, timelines and the way Microsoft has gone through with the architecture. तो Microsoft तकरीबन 2012-13 से काम कर रही है। टाइमलाइन जो है वो मैंने पीछे की नहीं ली, 2016 के बाद की टाइमलाइन ली। तो 2016 के बाद से जो है ना, Microsoft has heavily invested in AI side, and Microsoft understood that के in future is for AI, and जो भी evolution आएगी वो on IoT, AI, ML, these are the areas जिसमें evolution या revolution आने की तरफ। तो जुलाई 2019 में ओपन AI जो चैट जीपीटी का कोर है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट कर दिया। सही है। माइक्रोसॉफ्ट हेवीली इन्वेस्टेड ऑन दैट। फिर उसने उसकी इंटीग्रेशन शुरू कर दी विद इट्स एजोर। सही है। जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जो प्राइमरी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसके साथ उन्होंने इंटीग्रेशन शुरू की। फिर उन्होंने डिफरेंट फीचर्स लॉन्च किए ओपन AI के, ओपन सर्च के, जिसमें कोड बेस है, को पायलट्स हैं, थिंग्स लाइक दैट। और उसी के ऊपर अब माइक्रोसॉफ्ट इवॉल्व कर रहा है और उसी के ऊपर जो है वो अपनी चीजों को बिल्ड कर रहा है। सही है। दिस इज व्हाट when the partnership happened between Microsoft and OpenAI, ये वो एक इन्होंने न्यूज़लेटर लॉन्च किया था जिसके ऊपर उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये पार्टनरशिप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी डीपली चले जाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट AI के ऊपर या ओपन AI के अंदर मॉडल्स क्या होते हैं और इसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो अभी जो है वो हमारे पास मेजरली बेस मॉडल्स जो हैं, ये 4 बेस मॉडल्स जो हैं वो सपोर्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट। सही है। ये 4 मॉडल हैं। सही। तो चैट जीपीटी 3.5 एंड चैट जीपीटी 4। किसी को चैट जीपीटी 3.5 और 4 के बीच में डिफरेंस पता है क्या है? एनीवन? जी। डेटा सेट का जो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा है वो उसका नंबर ऑफ डेटा ज्यादा है। 3.4 के अंदर 3.5 से ज्यादा है नंबर ऑफ सेट्स। जी। देखिए, तो बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया कि मॉडल्स जो होते हैं ना वो डेटा सेट पर ट्रेन होते हैं। सही है। जितना बड़ा डेटा सेट होगा ट्रेनिंग का, उतना अच्छा मॉडल ट्रेन होगा, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। तो चैट जीपीटी 4 जो है वो मेरे ख्याल से 2022 तक का पूरा डेटा जो है ना उसने एब्जॉर्ब किया है। वो सारा डेटा, ऑल इंटरनेट डेटा हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय। सही है। चैट जीपीटी 3 मेरे ख्याल से 2021 या उससे पुराना डेटा यूज करता है। तो दैट इज हाउ बिग इट इज। सही है। तो चैट जीपीटी 4 जो है, ये जीपीटी 3 जो है वो मोस्टली आपकी टेक्सचुअल लेवल के ऊपर काम करता है, यानी कि आपको टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन करना है जिसे आप जीपीटी यूज करते हैं। सही है। उसी तरीके से डेली जो है, यानी कि जैसे आपने ग्राफिक्स की बात की, आप जब ग्राफिक्स पे काम करेंगे वो बेसिकली डेली यूज कर रहा हो। सही है। तो ये डेली वो मॉडल है जो उसके अगेंस्ट ग्राफिक्स डिजाइन या इमेजेस जनरेट करके देता है। जब आप उसको बोलते हैं कि मुझे एक खूबसूरत डॉग की इमेज दे दो जिसके अंदर उसकी आंखें रेड कलर की हों, जिसके बाल व्हाइट कलर के हों, तो दैट इज ऑन द मॉडलिंग साइड, डेली इज डूइंग दैट ऑन द बैक। सही है। इसी तरीके से कोडेक्स जो है, दैट इज अ मॉडल दैट इज यूज्ड टू जनरेट कोड। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, आप डेवलपर नहीं है लेकिन आपने कोड करना है, आप कोड जनरेट करना चाहते हैं, तो आप कोडेक्स यूज करके आप बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। मजाक कर रहा है ऐसा नहीं सकता, लेकिन मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट मॉडल्स। इसको बताने का मकसद ये है कि जब आप ओपन एआई यूज करते हैं ना, तो इट्स नॉट लाइक कि आप आए ओपन एआई को बोला ओपन एआई मेरा काम शुरू कर दो एंड इट स्टार्ट करो। यू हैव टू सिलेक्ट द राइट मॉडल्स। यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मॉडल्स क्या करते हैं, कौन सा मॉडल किस तरह से ऑपरेट करेगा। सही है। इन मॉडल्स के अंदर के सब मॉडल्स होते हैं जिनकी अपनी ऑपरेशनल वैल्यूज डिफरेंट होती है। सही है। और उनके हिसाब से फिर सिलेक्शन होती है और सिलेक्शन के बेसिस पर फिर मॉडल के रिजल्ट्स को वैल्यूएट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के ना ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे उसने अपनी एआई एम्पायर को खड़ा किया है। सही है। यहाँ इसको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि दीज आर वेरी क्रिटिकल। देखें, एआई विद रेवोल्यूशन जो है ना एक चैलेंज भी लेकर आती है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जब चैट जीपीटी आया था, लॉन्च हुआ था, जब काम हो रहा था ना, तो खासतौर पर डेवलपर्स को बहुत शौक होता है इनको यूज करने का। तो
सैमसंग के डेवलपर्स ने अपना कोड चैट जीपीटी पे डाल के और उससे काम करवा लिया। अच्छा, चैट जीपीटी उस जमाने में क्या करता था, जो भी कोड होता था वो एब्जॉर्ब कर लेता था और पब्लिक कर देता, सही है। तो प्रोप्राइटरी कोड ऑफ सैमसंग वाज पब्लिकली अवेलेबल टू द वर्ल्ड, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था और उन्होंने वो जी कोड अवेलेबल कर दिया, ठीक है। तो जब भी आप एआई के साथ इवॉल्व हो रहे होते हैं या जब भी एआई के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ फ्रेमवर्क्स डिजाइन करने होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पूरा एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जिसमें फेयरनेस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, सही है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये पिलर्स उसने डिफाइन किए हैं फॉर इट्स एज्योर फ्रेमवर्क। कि फॉर एग्जांपल जब आप एआई यूज कर रहे हो तो फेयरनेस यूज हो, यानी कि ऐसा ना हो कि एक आदमी पूरी बैंडविड्थ मेरी एब्जॉर्ब कर दे, बाकी लोग नहीं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीपीयूज हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं टू द इंडस्ट्री इन जनरल, लोगों के बीच में, सही है। इसी तरीके से रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, यानी कि आपका डेटा जो आप उसमें डाल रहे हैं वो सिक्योर है, सही है, आप जो इन्फॉर्मेशन उसमें से ले रहे हैं वो भी सिक्योर है, सही है। ऐसा नहीं है कि मैलवायर्स उसमें से निकल कर आपके पास आना शुरू हो जाए या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाए जो आपके सिस्टम को क्रैश कर दे, सही है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो क्वेश्चन आप करते हैं, जो डेटा इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, ऑल ऑफ दैट डेटा इन्फॉर्मेशन इज फॉर यू ओनली, सही है, दैट्स नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक, सही है। इसी तरीके से इंक्लूसिवनेस, यानी कि आप अपने अपने मॉडल को अपने सिस्टम्स के हिसाब से यानी अपने इकोसिस्टम के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। चैट जीपीटी तो जेनरिक है ना, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने फार्मा इंडस्ट्री के लिए चैट जीपीटी को डिजाइन करना है तो ये इंक्लूसिवनेस मैं फार्मा के लिए डिजाइन कर सकता हूँ, सही है। अगर मुझे किसी और इंडस्ट्री के लिए इसको डिजाइन करना है तो मैं उस इंडस्ट्री के लिए इसको डिजाइन। ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट आया, एज्योर गिव यू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑन टॉप, सही है। एंड अकाउंटेबिलिटी, कि जब आप अगेंस्ट मिसयूज करेंगे चीज को तो उसके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स होते हैं जो कि आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं, सही है। तो एज्योर की जो एआई कैपेबिलिटी है इस वक्त वो बेसिकली इन 4 मेजर चीजों पर बिलोंग करती है, सही है। दीज आर द 4 प्राइमरी थिंग्स जिसके ऊपर आपकी एज्योर की कैपेबिलिटी बिलोंग करती है, जिसमें सबसे पहली है जनरेट कंटेंट, यानी कि कंटेंट से मुराद ये टेक्स्ट कंटेंट है, किसी किस्म के मैसेजेस हैं, आपने शायर बनना है तो आप पोएम लिख देगा आपको, आपने जो है वो मुसन्निफ बनना है तो आपको स्टोरी लिख देगा, आपने जो है व्हाटएवर यू वांट टू डू इट कैन जनरेट टेक्स्ट अराउंड, सही है। समराइजेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपने किताब लिख दी है, अब आप चाह रहे हैं एक समरी जनरेट कर दें, आपने एक आर्टिकल लिखा है, आपने एक एक्सेल की शीट बनाई है जिसमें आपने पूरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की और आप उसकी एक समरी क्रिएट करना चाहते हैं, जीआईटीपीटी कैन गो एंड डू यू एज्योर एआई के साथ इसके साथ आराम से आप जनरेट कर सकते हैं। कोड जनरेशन स्पेसिफिकली फॉर डेवलपर्स, आप में से बहुत सारे लोग डेवलपर ना होने के बावजूद भी पावर बीआई यूज करते होंगे, कोई बीआई प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, किसी किस्म का भी है, तो उसमें एक वर्ड आता होगा एसक्यूएल के नाम से कि एसक्यूएल लिखनी है या एसक्यूएल यूज करनी है। इफ यू आर पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट इन सम लेवल तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट, सही है। चैट जीपीटी कैन गिव यू दैट, आप उसको इंग्लिश में बताएं मुझे जो है मेरी कंपनी के 10 सबसे बेस्ट ला दो, तो उसके अगेंस्ट वो आपको पूरी सीक्वल लिख कर दे देगा, वो सीक्वल आप यूज करें और उसके ऊपर जनरेट करें। You don't basically have to learn languages, you don't have to learn scripts, it will do it for you automatically. So yeah, और फिर semantic search. Semantic search is something that's been worked on for long time. लेकिन this really evolves it. Semantics क्या होती है कि what do you really mean? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के पास जाते हैं, आपके पास कोई आता है और बोलता है यार मुझे ये बनाना है, फिर जब आप उसको बना के जब उसको ले जाते हैं ये थोड़ी था, मैं कुछ और सोच रहा, सही है। तो वो सिमेंटिक्स होती है कि समझना कि बंदा जहन में सोच क्या रहा है, उसको किस तरह से चाहिए चीज, सही है। अक्सर वो वर्ड्स में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इमोशंस नहीं डाल सकते, चीजें नहीं करते। तो विद एआई यू कैन डेफिनेटली डू दैट, यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द इमोशंस, यू कैन अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन जनरल एंड उसके बेसिस पे रिजल्ट्स देंगे, सही है। तो ये बेसिकली क्योंकि मेरे पास अकाउंट एक्सेस नहीं था तो आई टुक सम स्नैपशॉट्स ऑफ हाउ बेसिकली अगर आपने कभी आप एज्योर में चले गए और एंटर हो गए तो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। तो इसका एक पूरा सेकेंडरी प्लेटफॉर्म है, सो ये गेटिंग स्टार्टेड विद एज्योर ओपनएआई, सही है, जिसमें आपके पास ये चारों जो चीजें हमने डिस्कस की ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल, सही है। यानी कि सिमेंटिक सर्च है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं और जनरेटिव एआई के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे, सही है, तो ये आपको एक प्लेग्राउंड दे देगा। प्लेग्राउंड इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ जैसे चैट जीपीटी का इंटरफेस है वैसा हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस प्लेग्राउंड में आप बैठ के
अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स करते हैं फॉर द डेटा दैट यू हैव टू सी कि यार ये मेरे पर्सपेक्टिव से या मेरी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। जेनरिक नहीं है ये, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि बेसिक आपने जनरेटिव एआई कर दिया, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको कस्टम मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, इट्स नॉट एज सिंपल एज कि आपने कोई भी चैट जीपीटी का टूल उठाया, लगा दिया, दैट शिट खत्म हो गया। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता है कि हाउ यू विल बी एबल टू डू इट, व्हाट आर द स्टेप्स टू डू इट इन एज्योर, कितना सिंपल है, कितने आराम से हो जाता है और कितने जितनी जल्दी आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू डू है, सबसे पहले आप ट्रेनिंग का डेटा प्रिपेयर करें। दैट इज द बेसिक थिंग जो कि आपको करना होगा कि आपने अपने किस सेट ऑफ डेटा पे उसको ट्रेन करना है। सही है, तो फर्स्ट ट्रेनिंग एंड देन वैलिडेशन। ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुबीन को नाजमाबाद जाना है। सही है, इसको ट्रेन करो मुबीन नाजमाबाद। तो नाजमाबाद जाने के लिए मुबीन जो है वो शारा फैसल जाएगा, शारा फैसल से असद स्क्वायर जाएगा, असद स्क्वायर से लालू के जाएगा, नाजमाबाद जाएगा। दैट इज व्हाट मुबीन पाथ विल बी। सही है, मैं मुबीन को इस तरह से डिफरेंट एरिया से ट्रेन कर दूंगा। नाउ वैलिडेशन इज कि मैं उसको बोलूं कि अच्छा हसन स्क्वायर से नाजमाबाद जाना है, क्या आप पाथ दूंगा। तो बेस्ड ऑन दैट डेटा वो एनालाइज करेगा कि अच्छा हसन स्क्वायर से नाजमाबाद में ये रात भी अवेलेबल है, तो वो उसको वैलिडेट करेगा कि ये सही डेटा है, ये पाथ उसको देना चाहिए। तो दैट इज द वैलिडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके अगेंस्ट जो है आप अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 4 5 डिफरेंट किस्म के मॉडल हैं, उनके अंदर सब मॉडल हैं। आप उसमें से मॉडल चूज करेंगे कि यार मेरा कौन सा मॉडल है जो मैं अप्लाई करूं तो मेरे डेटा के ऊपर मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले। सही है, तो आप उन मॉडल्स के ऊपर इनकी ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे, उसमें वैलिडेशन डेटा देखेंगे, उसको रिजल्ट्स ऑब्जर्व करेंगे। सही है, फिर उन मॉडल्स के अगेंस्ट आप स्टैटस चेक करेंगे कि मेरे ट्रेनिंग डेटा पे कितने फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव या कितने रिजल्ट्स बेहतर है। सही है, बेस्ड ऑन दैट यू विल ट्विक द मॉडल के अच्छा मुझे मॉडल में ये ट्विक कर दो, या इसमें पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली आप पैरामीटर्स चेंज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार मेरा मॉडल किस तरीके से ऑप्टिमली परफॉर्म कर सकता है। फिर वंस यू डू दैट फिर आप उसको डिप्लॉय करेंगे। सही है, टू अ लाइव एनवायरनमेंट। लाइव एनवायरनमेंट डिप्लॉय करने के बाद आप उस कस्टमाइज मॉडल को यूज करेंगे, उसको लिंक कर देंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ एंड यू विल बी हैप्पी। तो थोड़ा सा स्क्रीन ट्रांजिशन भी दिखा दूं ताकि आप लोगों को जब आप यूज कर रहे हो तो पता हो। तो जब आप ओपन एआई के अंदर जाते हैं तो आपके पास नीचे सेकंड ऑप्शन आता है जिसमें आप यू विल चूज दैट कस्टम मॉडल ट्रेन। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट अ कस्टम मॉडल। सही है, कस्टम मॉडल क्रिएट करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कि किस मॉडल पे मुझे ट्रेन करना है। सही है, वंस यू सिलेक्ट द मॉडल फिर आप उसके बाद ट्रेनिंग डेटा देंगे। अच्छा, ट्रेनिंग डेटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेनिंग डेटा कितना होना चाहिए। जैसे चैट जीपीटी के पास तो ट्रेनिंग डेटा ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट ऑफ डेटा। सही है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास यूजली तो होता नहीं है इतना डेटा, लेकिन फिर भी जितना भी होता है वो सारा डेटा तो ट्रेनिंग, अगर सारा डेटा आप ट्रेनिंग में लगा देंगे तो फिर आपके एक्चुअल रिजल्ट के रहेंगे। तो ट्रेनिंग डेटा को ना आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है कि मुझे इस डेटा को ट्रेन करना है, इस डेटा को ट्रेन करना है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक सिंपल तरीका ये होता है आपने सीएसवी दे दी और उसने काम कर लिया, लेकिन जब आप लार्ज स्केल पे काम करते हैं ना तो सीएसवी में डेटा नहीं आता। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉब्स का। तो ये एज्योर के ब्लॉब्स होते हैं जिसके ऊपर आप डेटा को अपलोड करते हैं, वहां से वो ट्रेनिंग ले सकता है। तो देयर आर टू वेज कि आप लोकल फाइल यूज कर लें या आप ब्लॉब्स यूज कर लें। सही है, अच्छा फिर इसके बाद वंस यू डू दैट फिर आप वैलिडेशनल डेटा अपलोड करते हैं। सेम इज द प्रोसेस कि आप यूजिंग फाइल यूज कर लें या यूजिंग ब्लॉग यूज कर लें। देन यू सेट अप द पैरामीटर्स। ये वो पैरामीटर्स हैं जिनकी मैं आपको बात करता था कि इनकी ईपॉक्स कितने होंगे। सही है, इनका बैच साइज क्या होगा। अच्छा, ईपॉक्स और बैच साइज की कैलकुलेशन बेसिकली एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है कि कितना सैंपल है के अगेंस्ट मैं कितने यूनिट्स रन करूंगा, कितने बैचेस प्रोसेस करूंगा फॉर दैट सैंपल, ये उसको प्रोड्यूस करने के लिए। वंस आई डू दैट तो मेरे पास एक फाइनल स्टेज आ जाती है कि यार अब मेरा डेटा और मॉडल रेडी है टू बी ट्रेन्ड। अभी ट्रेनिंग हुई नहीं है, अभी तो प्री सेटअप है। जब मैं इसको मॉडल को ट्रेनिंग पे लगा देता हूँ तो मेरा मॉडल ट्रेनिंग के प्रोसेस पे गुजरना शुरू होता है। दिस इज हाउ द मॉडल इज बीइंग ट्रेन्ड, पीछे चल रहा होता है। सही है, ट्रेनिंग के बाद ये मुझे उसके स्टैटिस्टिक्स एंड रिजल्ट्स देता है कि अच्छा मॉडल में ये हुआ, इसने ये रिजल्ट दिए, इतने ऑब्जेक्ट्स ट्रेन हुए, इतने नहीं हुए, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
बेस्ड ऑन दैट आप अपने मॉडल को ट्विक करते हैं, आप दोबारा से रीट्रेन करते हैं, दोबारा से उसको चेंजेस करते हैं ताकि मेरे पास मेरा ऑप्टिमल रिजल्ट अचीव हो। वंस यू अचीव दैट ऑप्टिमल रिजल्ट, यू डिप्लॉय दैट मॉडल। जब आप डिप्लॉय करेंगे तो फिर सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस के एक प्लेग्राउंड आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो वो फिर आपके जो है ट्रेनिंग मॉडल के अगेंस्ट वो प्लेग्राउंड है, या आप उसको डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन से लिंक कर सकते हैं यूजिंग एपीआई और उस मॉडल को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर एंड टू एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सही है? तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई हैव नेक्स्ट इज कि इन टर्म्स ऑफ एन ओवरऑल आर्किटेक्चर, अगर हम इसको और थोड़ा होलिस्टिकली ऊपर ले जाएं, अभी हम थोड़ा सा नीचे थे, अगर हम इसको ऊपर लेवल पे ले जाएं तो हाउ डज दैट वर्क? तो इफ यू लुक इनटू दिस के व्हाट यू डू इज कि आप सिस्टम से या डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन निकलती है और वो आपके पास एज्योर के अंदर स्टेप फंक्शंस या किसी भी स्टेप फंक्शंस के अंदर जाती है। वो फंक्शंस जो हैं वो उसके अपने प्राइमरी डीबी यानी कि कॉस्मो डीबी जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एज्योर के डेटा क्लाउड्स वगैरह के अंदर चली जाती है। एंड बेस्ड ऑन दैट आपकी पावर बीआई के रिजल्ट्स और पावर बीआई की कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स जो है रिपोर्टिंग वो उससे ही जनरेट होती है। तो दैट क्रिएट्स इट मोर पावरफुल एंड मोर ड्रामेटिक अराउंड। तो ये एक सेकेंडरी आर्किटेक्चर है विच इज अ मच बिगर वन इन अ सेंस के उसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मल्टीपल है, लेकिन रिपोर्टिंग का प्राइमरी सोर्स जो है ना वो आपका चैट जीपीटी। सही है? तो उसको प्राइमरीली यूज करते हुए आप प्राइमरी इंफॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं, मॉडल उस पर ट्रेन होता है और उस डेटा को लेते हुए हम पावर बीआई से रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स। सही है? अच्छा, कुछ टिप्स हैं इनमें जो मैं आपको देना चाहता कि basically how and what to consider when you are using OpenAI and Power BI या generative AI के साथ काम करें। सबसे पहले when even before starting anything you need to have a set goal कि एजेंडा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। सही है? इट्स नॉट जस्ट मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने कुछ लिख दिया। जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आपको कुछ चीज अचीव करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को स्मार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी इन्वेंट्री की जो पूरी डाइल्यूशन है उसको स्मार्ट करना है या व्हाटएवर एक्सवाइजी। ठीक है? तो वो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आप उसको सेट करते हैं। वंस यू सेट दैट, सही है, फिर आप उसके अगेंस्ट मॉडल सिलेक्शन करते हैं क्योंकि आपको उसको डेटा को ट्रेन करना है। सही है? वंस यू हैव दैट मॉडल ट्रेन तो फिर आपके पास प्रॉम्प्ट, प्रिसिजन और शॉर्ट्स, यानी कि बेसिकली जितना भी आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जो भी आप क्वेश्चन टाइप करते हैं ना, दीज आर ऑल टोकनाइज्ड इनटू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन ट्री बनाते हुए उसमें से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर आपके लिए जनरेट कर रहा होता है। तो वो प्रॉम्प्ट्स जो कि आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं, आप उसको लर्न करते हैं। ये यूजुअली आपके पास जो इंजीनियर्स होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, वो उस पर काम करते हैं। सही है? फिर पैरामीटर एडजस्टमेंट कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए या आपको एक्यूरेसी कम चाहिए, उस चीज पे काम करते हैं। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्टिंग। एवरी टाइम यू सेंड आउट अ रिक्वेस्ट टू चैट जीपीटी या व्हाटएवर ओपनएआई सिस्टम यू आर यूजिंग, उसके पीछे एक जीपीयू कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। वो फ्री नहीं होता। हमें फ्री लग रहा होता है लेकिन वो फ्री नहीं होता। सही है? तो एवरी रिक्वेस्ट वी सेंड आउट उसके अगेंस्ट एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो उस कॉस्टिंग को कितना रखना है, कितना बेयर बोन रखना है, कितना देना है, कितना नहीं करना, उसकी कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए व्हेन यू वर्किंग विद ओपनएआई। सही है? तो ये कुछ इसके बेसिक सर्विस मॉडल्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। एडा है, ये क्यूरी है, डिविंची है। सही है? दीज आर चैट जीपीटी मॉडल्स जो कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरह से यूटिलाइज होते हैं। सही है? इसके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दी थी आप लोग के लिए, ताकि अगर आप लोग जब मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो आपको पता हो कि बेस मॉडल किस तरीके से चूज करना है। सही है? ये बेस लेवल दो पैरामीटर्स मैंने मेंशन किए हैं, टेम्परेचर और टॉपिंग। सही है? दीज आर बेसिक मॉडल्स जो आप अगर इफ यू लुक एट ऑन द बैक तो लेफ्ट साइड पे भी पैरामीटर्स का ऑप्शन आ रहा है। दीज आर द सेम पैरामीटर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सही है? इसके अलावा सही है, तो ये टेम्परेचर क्या होते हैं कि मॉडल का रिस्पांस को रेंडमाइज करने के लिए यूज होते हैं कि कितना ज्यादा वो एक्सट्रैक्टली या रेंडमली इंफॉर्मेशन निकाल सकेगा और ज्यादा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के साथ काम कर सकेगा। सही है? जितना ज्यादा टेम्परेचर आप लोअर करेंगे उतना प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना आप टेम्परेचर हाई करेंगे उतनी प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रेडिक्टेबिलिटी कम होने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि आज मौसम कैसा है, तो आप अज्यूम कर रहे होंगे, ये इसका तो येस नो का आंसर है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और जेनरिक कर दें कि मुझे यहाँ जाना है, तो प्रेडिक्टेबल आंसर है कि यार ये पाथ यूज करो। ये उसको अगर
थोड़ा और ब्रॉडर कर दो तो वो प्रॉब्ली कोई दूसरा पाथ भी आपको दिखा दे। तो दिस इज हाउ सही है। टॉप पी जो है वो एक और मैकेनिज्म होता है मॉडल के रिस्पॉन्स में रेंडमनेस लाने का, सही है, ताकि वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आपके पास अवेलेबल हो, सही है। तो ये टोकनाइजेशन कम रिड्यूस और एक्सटेंड करने में यूज होता है। एंड दीज आर टू बेसिक पैरामीटर्स जिसको यूज करते हुए हम अपने रिस्पॉन्सेज के साथ चेंजेस कर रहे हैं। इसके अलावा ये कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं, सही है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास टोकन होंगे उतना ज्यादा प्रोसेसिंग ज्यादा लगेगी, और जितनी प्रोसेसिंग ज्यादा होगी उतनी जीपीयू कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन के अंदर कितनी मैक्सिमम लेंथ ऑफ टोकनाइजेशन आपने करनी है, कितने टोकन देने हैं, कितने नहीं देने, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग किस तरीके से करनी है, सही है, कहाँ पर आपने इसको रोकना है, कितना इन्फॉर्मेशन फीड इन करनी है, कितनी नहीं करनी, कितना जनरेट करना है, कितना नहीं करना। दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन कंट्रोल विद ओपनएआई की जो पी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड में एक स्टीवन हॉकिंस का एक कोट है दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट आई विजुअलाइज अ टाइम व्हेन वी विल बी टू robots, we will be to the robots what dogs are to the humans, and I am rooting for the machines. So be vigilant to the time jab we'll have robots working with us in our offices, working together and helping us grow. So yeah, that doesn't mean it will replace us, but that means that it will evolve all of us into a much bigger and better human beings. So looking forward to that. Thank you very much. Sure, questions please. एक क्वेश्चन है कि आप अपनी प्रोडक्ट में जो इस कॉग्निटिव एआई को जनरेटिव एआई को किस तरह से यूज करें, मतलब किस तरह से आप अपने बिजनेस गोल अचीव करें? तो अभी तो हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट द प्लान है कि इसको हम बहुत सारी जगहों पे यूज करेंगे, सही है। एग्जांपल, जब हमारे पास सेलर्स ऑन बोर्ड होते हैं एंड दे प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए हम जनरेटिव एआई यूज करेंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक सेलर है जो कि जोड़े बाजार में बैठा हुआ है एंड ही केम इन एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अराउंड हिज प्रोडक्ट, तो वो जाहिर है वो कंटेंट कभी भी उतनी क्वालिटी का नहीं है। प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो वो डालता है उसकी क्वालिटी कभी भी वो नहीं होगी, तो उसको रिफाइन करना, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको क्वालिफाई करना एक काम नहीं करना। हमारा जो कॉल सेंटर है, जो चैट सेंटर है विद आवर कस्टमर्स, उसको भी हम जनरेटिव एआई के थ्रू कॉग्निटिव करना चाह रहे हैं, वो भी एक काम है। तो इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम ऑन द साइड इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का प्लान करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ऑनलाइन अगर किसी को How do you compare a paid customer or a paid seller or authentication steps? देखिए, उसका जनरेटिव एआई से तो ताल्लुक नहीं होता। वो बेसिकली दैट इज मोर ऑन फ्रॉड डिटेक्शन। आपको अपने जनरेटिव एआई को भी प्रोटेक्ट करना है कि वो फॉल्स। इसके लिए सर्वर लेवल पे जो है वो आप जो है वो लगाते हैं वॉल्स, फायरवॉल्स आपके पास होती है, जिसमें हमारे पास रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, सही है। रेट लिमिटिंग के कॉन्सेप्ट से हम अगर किसी जगह से रिडंडेंट रिक्वेस्ट आ रही होती है तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, सही है। दूसरा ये है कि क्योंकि हमारा सिस्टम B2B है, तो यूजुअली जितने भी यूजर्स कन्वर्सेशंस में आते हैं वो दीज आर ऑथेंटिकेटेड यूजर्स वाया प्रोसेस, जिसमें उनकी NIC की ऑथेंटिकेशन होती है, वैलिडेशंस होती हैं, थिंग्स लाइक दैट। रेट लिमिटिंग, ये चीजें रेट लिमिटिंग से कंट्रोल हो जाती हैं। सर इसके बाद से एआई के वजह से सवाल था कि जैसे हमने प्रीवियस डेज में इसको सुना कि एआई चैटबॉट जो है वो आपस में चैट्स कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ जगहों पर खदशात पैदा हुए कि ये चीज जो है बहुत ज्यादा नुकसान साबित, क्योंकि इसके दरमियान दो बोर्ड्स के दरमियान कोई ह्यूमन तो है नहीं, एक बोर्ड सवाल कर रहा है, दूसरा बोर्ड रिप्लाई कर रहा है, एंड देन कम्युनिकेशन चल रही है, सोन चल रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटीज से हमारा सर्वर काफी इंगेज हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है। सो इस तरह की एक्टिविटीज को एआई के जरिए हैंडल कर सकते हैं जी। तो जिस तरह से जनरेटिव एआई का कंटेंट बनाने के लिए टूल्स आए ना, उसी तरीके से उस कंटेंट को रिव्यू करने के लिए कि या ये ह्यूमन रिटन कंटेंट है
या जनरेटेड कंटेंट है उसके लिए भी मॉडल्स डेवलप होते हैं, सही है। तो जब आपके पास कंटेंट आता है ना, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं इधर ही खड़ा था तो वो देखिए आप थीसिस लिखे हुए हैं कोने में पड़े हुए, सही है। तो अगर आप इमेजिन करें एक बंदा पीएचडी कर रहा है और उसको चैट जीपीटी टाइप टूल मिल जाए जो उसका पूरा थीसिस लिख दे, सही है, तो उसकी तो जिंदगी आसान हो गई। तो पीएचडी डॉक्टर सब बैठे हुए होंगे यहाँ पे घूम रहे होंगे, सही है। तो सबसे पहला ये तो आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है। अब आप सोचें अगर आपको 10 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि चैट जीपीटी से डॉक्टर बने हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक चीज है। तो उसके लिए उन्होंने इन पैरेलल टू दैट, मेरे ख्याल से जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ उसके कोई 1 से 100 महीने के अंदर ही उसका फ्रॉडुलेंट डिटेक्शन या ऑटोमेटेड जनरेशन डिटेक्शन के सिस्टम हार्वर्ड ने भी लॉन्च कर दिए, सही है। एमआईटी ने भी उसके पूरा एक आर्टिकल लिख के उसके ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर लॉन्च किया। तो देयर आर टूल्स एंड मॉडल्स अवेलेबल टू डिटेक्ट कि आपका जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जो सामने की पार्टी है, जो टेक्स्ट आपके पास आ रहा है, इज इट समथिंग दैट इज प्री जनरेटेड टेक्स्ट या इज इट समथिंग दैट इज ह्यूमन जनरेटेड, तो वो डिटेक्शन आप कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you so much, sir. It was quite interesting and informative from your side. Now, I would like to call Dr. Shahabuddin Siddiqui. He is Director of Academics. He's here for the talking of thanks for our guest speakers. Bismillahirrahmanirrahim. It was a good initiative by our local student community of Microsoft, because we are creating different communities of Microsoft, Cisco, IEEE student branches are also there, and we are working with Google also. So it's a good initiative that this annual event was organized at Newport Institute. As a teacher of AI, as some of my AI students are also sitting over here, and I think Haris ने कुछ क्लास के लेक्चर के अलावा कुछ सीखा होगा आज के सेशन में। क्लास की AI को माइक्रोसॉफ्ट की AI के साथ अलाइन किया होगा, पता नहीं क्या चीज़ ओपन हुई होगी, मुझे नहीं पता, दिमाग ओपन हुआ होगा या कुछ और ओपन हुआ, क्योंकि कॉपी में अगर लिखा गया होगा, जैसे मैंने क्लास में लिखवा दूँ तो अभी भी कोई किसी ने नोट्स उतारे हो तो वही हमारे पास आगे कंटिन्यू हो जाएंगे, मतलब जो हम रिकॉर्डिंग अपने जहन में रखते हैं वो एक ग्लिम्स आता है, फिर कुछ देर के बाद हम किसी और चीज़ में बिजी हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्रेन योरसेल्फ। आप अपने ब्रेन को जैसे ट्रेन करेंगे, उसी तरह जब वो टेस्ट के लिए बैठेंगे तो आपके जहन से ही वो जवाब निकलेगा जिसको आप कॉपी में लिखेंगे, है ना। जब वो लिखने के हिसाब से वो किसी कॉपी में लिख के आपने अपने जहन के अंदर लेके नहीं गए होंगे, क्योंकि जब इंसान एक दफा लिखता है वो वर्ड ऑटोमेटिकली चला जाता है जहन में कि मैंने कभी कुछ लिखा था, कभी मैंने ओपन एआई लिखा था, तो उसको ओपन एआई ही लिखेगा दोबारा, एआई ओपन नहीं लिखेगा। ये भी बहुत बड़ा फर्क है। और चैट जीपीटी अगर इस तरह की तमीज नहीं करेगा तो जब भी वो असाइनमेंट पकड़ा जाता है कि वहां पे, अभी मैंने एक रिसर्च पेपर देखा रिसेंटली जिसमें 2 लिखा हुआ था, T0, T और 0, तो 0 क्यों आया? वो O को 0 समझ रहा है, कहीं से स्कैनिंग हुआ, कहीं से कुछ हुआ, कहीं से वो 2 का TO2 जो एक छोटा सा वर्ड है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी है, वो T0 लिखा हुआ है। या तो वो किसी स्टेट में होना चाहिए था, किसी का स्टार्टिंग स्टेट, और वो T0 भी तो स्टार्टिंग स्टेट होगा ना, उसका कोई TN पड़ा होगा अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो वो T0 जो है ऑटोमेटिकली उस पूरे डॉक्यूमेंट को फेक कर देगा। तो हमारे जो चेकिंग पॉइंट्स है एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर, एज अ रिव्यूअर, वो कुछ जगहों पर जाकर अटक जाते हैं। तो उसी तरह अटकना आपके जनरेटिव एआई को भी अपने मॉडल को जब ट्रेन करे तो वो हाईलाइट करे कि ये जगह जो है वो जनरेटिव है और ये चीजें ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल और कॉपी में फर्क करना भी एक काम, व्हाट इज ओरिजिनल एंड व्हाट इज ह्यूमन रिटन एंड व्हाट इज। तो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप एक और लेक्चर ना शुरू कर दें, एक और हम प्रेजेंटेशन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं बगैर प्रेजेंटेशन के चलूंगा तो फिल्मबंदी बहुत तकलीफ हो जाएगी।
तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए सारे स्पीकर्स का शुक्रिया जो आए माइक्रोसॉफ्ट के, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक प्लेटफॉर्म है लर्निंग का। प्रैक्टिशनर जब साथ बैठ रही है, कम्युनिटी साथ बैठने के लिए कि आपका जो प्रैक्टिकल इशू है, आपके सामने अगर कोई उसका यूजर बैठा है जो उसको यूज कर रहा है, तो वो लाइन ऑफ कोड में क्या एरर आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, कहने को बहुत कुछ है। अभी भी एक FIP की प्रेजेंटेशन में सुबह ले रहा था, रिव्यू कर रहा था, तो वो साहब मुझसे कह रहे हैं कि जब मैं कोड में 000 डाल रहा हूँ तो वो सेव नहीं कर रहा डेटा, उस कोड की जगह जब मैं ABC डाल रहा हूँ तो वो सेव कर रहा है। तो सर आप बता देंगे क्या हो रहा है? मैंने कहा कोड आपके पास है, जूम मीटिंग में मैं दूसरे एंड पे बैठा हूँ, आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसका डेटा टाइप तो चेक करें कि वो आप कैरेक्टर सेव कर रहे हैं या इंटीजर्स को रखा हुआ है। कहीं ना कहीं इंटीजर और कैरेक्टर की का फर्क है, A to I हुआ है या I to A हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है और आपको पता भी नहीं कहाँ हुआ है। तो वो चीजें अपने कोड को संभालना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको चेक करना आपका काम, उसको आप देखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द थिंग, एंड आई थिंक उसके बाद मैं कुछ Thank you so much, Dr. Saab. In the end, I would like to request Dr. Islam, Sir Islam and Dr. Shahabuddin by presenting bouquets to our guest speakers. So kindly, I request both of the speakers to come on the stage, and both of the, yeah, please. Thank you so much, sir. Thank you so much. जी अच्छा these certificates will provide. All right. We have some volunteer certification here, so I would be calling one by one, and sir will present these certificates to all right. Sir Shahabuddin and Sir Islam will present these certificates to the students. All right. The very first name is Kumail Abbas. And the second is Rukhsar Shafakar. All right. Now I would like to call Sir Mubeen on stage so that he would distribute rest of the certificates to the volunteers. All right. The next is Muhammad Jazir Javed and Aruba Jamal. Neha Binte Shaheen. Shurjeet. All right. Muhammad Tayyab Siddiqui. Haris Mia. Tayyab Siddiqui. Haris Muhammad Umair. Abdul Rahman. In the last.
Last certificate for our host, Ms. Fatima Hashmi. Thank you. It's our I'm inviting all participants. एक सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स जो ऑर्गेनाइजर